जी बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे टेक्नोलॉजी के इस युग में कहां नए जमाने के प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं। काबिलियत और कौशल के दम पर कैसे विश्व के दिग्गजों के सामने कैड प्रोफेशनल्स की नई फौज को तैयार कर रहा है। पेश है हमारी खास पेशकश, कौशल, काबिलियत और कैड। डिजिटल युग और कंपटीशन के इस दौर में आज करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए हर प्रोफेशनल को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग की जरूरत है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में आज तेजी से तकनीकी क्षेत्र में विकास हो रहा है। प्रोफेशनलिज्म के इस दौर में विश्व भर के प्रोफेशनल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए सही ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। कैड सेंटर पिछले 27 साल से दुनिया भर के 24 देशों में 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज के साथ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक बड़े नाम के रूप में सामने आया है। लाखों इंजीनियर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कैड की इस विश्व स्तरीय ट्रेनिंग से फायदा लेकर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं। हम लोग के यहाँ पे कुछ एडवांस कोर्सेज हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज हैं जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी लोग बाहर से, अब्रॉड से, ओवरसीज से आते हैं इंडिया में, हमारे सेंटर्स पे ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ के सेंटर पे ज्वाइन करते हैं ताकि उनकी जॉब में उनको उन्नति मिल सके और तरक्की मिल सके। कैड की शुरुआत साल 1988 में हुई थी। तब से सीएडी, सीएई, ग्राफिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कैड सेंटर ने कई सराहनीय काम किए हैं। caddcentre we started 27 years ago, started teaching CAD, the first company to start CAD training. The last 27 years we have trained more than 10 lakh students, okay, who has grown in organization. There are companies where we train them as fresh engineers. Now they are the chairman of the company in the last 27 years. They have progressed. कैड सेंटर में इंटरनल ट्रेनिंग पर काफी जोर दिया जाता है ताकि एक स्टैंडर्ड बनाए रखा जा सके। यही वजह है कि ट्रेनर्स के लिए इंटरनल ट्रेनिंग एकेडमी खोली गई है। The goal was to really run a parallel skills training effort. So we even had this code saying College for Knowledge, caddcentre for Skills. किसी कंपनी की ग्रोथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कुशल प्रोफेशनल्स काफी अहम रोल निभा सकते हैं। डिजिटल युग के इस दौर में हर दिन इंडस्ट्रीज एक नया रूप ले रही हैं और ऐसे में नई टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए जरूरी है अच्छे कोचिंग और मार्गदर्शन की। कैड सेंटर पिछले कई सालों से इंडस्ट्री की इन जरूरतों को समझते हुए प्रोफेशनल्स की डिमांड को पूरा करता नजर आ रहा है। कैड सेंटर की जो स्पेशलाइजेशन है बेसिकली ऑटोकैड में, ठीक है। अगर फर्दर सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस किया हुआ है, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन ऑटोकैड में ही है क्योंकि ऑटोकैड में आज की डेट में यहाँ से मैक्सिमम एडमिशन्स होती हैं और स्टूडेंट मैक्सिमम प्लेस्ड भी होते हैं। आज की डेट में प्रोफेशनल्स भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं या उन्नयन करते हैं, उसके लिए वो हमारा कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ एडवांस कोर्सेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एनालिसिस के अंदर, तो वो लोग अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए हमारा पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स। We are in the skill development industry. There's a lot of focus about skills, in India. Today the Prime Minister or everybody is talking about skills. caddcentre trains more than 1,20,000 students every year. So we are in the skilling industry. We train a lot of people and make them employable and we improve their skills. People who graduate have the theoretical knowledge, okay, but how do you apply it is more important than the theory. So even if you have understood and you have a very high skill set, say at CAD Center in utilizing a particular CAD tool, it's not the be all and end all. The real driver is the ability to think and apply that knowledge to a situation. कैड सेंटर एक ऐसा नाम है जो पिछले कई सालों से प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग से जुड़ी हर जरूरत को पूरा कर रहा है। इस सेंटर ने इंडस्ट्री की जरूरतों को समझते हुए एक ऐसा कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया है जो मौजूदा दौर में
किसी भी प्रोफेशनल की ग्रोथ के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये कोर्सेज हैं मैकेनिकल कैड, इलेक्ट्रिकल कैड, आर्किटेक्चरल कैड, बिल्डिंग डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, लैंड सर्वे एंड ट्रांसपोर्टेशन। Started with just one set of courses for computer design. Now we have courses on CAD, we have courses on, let's say, we have a brand called Dream Zone, which is focusing on the artistic side. We have a brand called Synergy, which is focusing on management, and so on and so forth. कैड सेंटर ने प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। इसी का नतीजा है कि इस इंस्टीट्यूट से निकले प्रोफेशनल्स किसी भी इंडस्ट्री की तकदीर बदल सकते हैं। कंपटीशन के इस दौर में हम सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और आगे निकलने के लिए जरूरत है अच्छे स्किल्स की, लेकिन बिना अच्छी ट्रेनिंग के ये हासिल करना मुश्किल है। कामयाबी, शोहरत और रुतबा, इन शब्दों से हम सभी परिचित हैं। हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, सफलता हासिल करना सबकी चाहत होती है। सफल होने का पहला फॉर्मूला है स्किल, लेकिन बिना सही ट्रेनिंग के यह मुमकिन नहीं है। Somebody working in an organization, what an organization looks for is skills. What gives an employment is the knowledge coupled with skills. And when somebody they continue to develop their skills, they continue to progress in the organization. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट का नारा दिया और इसी नारे को बुलंद कर रहा है कैड सेंटर। कैड सेंटर से ट्रेनिंग करके हजारों इंजीनियर्स, ग्राफिक आर्टिस्ट और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आज देश विदेश की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहे हैं। यहाँ के कुछ जो सीनियर्स हैं हमारे आज के टॉप लेवल एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी इससे बड़ी तो एडवांटेज कुछ दे नहीं सकता कैड सेंटर। कैड सेंटर का दावा है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स की टीम है जो किसी भी कैंडिडेट को जरूरत के हिसाब से ट्रेन करती है। हमारा कोर्स स्ट्रक्चर खास इसलिए है बिकॉज हमारा जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ओवरसीज देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन अवर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। The other different aspects is for longer retention and more understanding, हम लोग एक कोर्स मटेरियल भी इनको प्रोवाइड करते हैं। caddcentre हमारा कंपनी 27 इयर्स पहले चेन्नई में चालू हो गया एंड तब से कई बातों में हम बहुत पर्टिकुलर है, ध्यान देते हैं। उसमें एक है जो भी कोर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसका कोर्स मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले बनाते हैं एंड कंटेंट्स बहुत ज़रूरी है। कैड सेंटर भविष्य की जरूरतें भी बखूबी समझता है। यही वजह है कि यहाँ ट्रेनिंग के हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है ताकि प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा कर सकें। कैड स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई से जुड़ी हर जरूरत को पूरा किया जाता है और इस बात का सबूत है यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। हर स्टूडेंट की जरूरत अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना आसान नहीं होता, लेकिन कैड सेंटर स्टूडेंट्स की जरूरतों को बखूबी समझता है। यही वजह है कि यहाँ स्टूडेंट्स में जो असमंजस होता है उस पर खासा ध्यान दिया जाता है। कैड सेंटर में बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, हर एक स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। कैड सेंटर हमें एक अलग पाथ दिखाता है जिससे हम एक एक्सीलेंस की तरफ जा सकते हैं। इंडस्ट्री में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए कैड सेंटर ने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज को अपने करिकुलम में शामिल किया है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, जैसे BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, तो जो चीज़ें हमने कैड सेंटर से सीखी है, कैटिया के बारे में सब, वो बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज रहती है। वहाँ पे आप जाके बहुत अच्छी तरीके से अपना एक्सप्लेन कर सकते हो खुद को। We are in the professional education industry. The definition of a professional course is that knowledge coupled with the skill is called as the professional course. शिक्षण और कौशल के दम पर एजुकेशन सेक्टर में मजबूत पकड़ बनाने के बाद कैड सेंटर का लक्ष्य है दुनिया भर के लगभग 50 देशों में 1000 फ्रेंचाइजीज के साथ नया कीर्तिमान स्थापित करना।
Our franchise model today is considered one of the big innovations and a very highly successful one. We have in excess of 600 franchisees in India for all the brands put together. All through these years, we've been able to increase our coverage. प्रोफेशनल्स के बीच बढ़ रही लोकप्रियता और हर साल हो रहे बेहतरीन प्लेसमेंट्स ये साबित करते हैं कि आने वाले दिनों में कैड सेंटर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान बनाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को सही दिशा मिल सके। Our centers does something called a placement assistance. Because it's a skill-based training, even you organize for interview, they have to go, they have to demonstrate, they will ask, okay, design this and show it to me. So having a certificate is not good enough. They have to design the product and show them. Okay, so we normally arrange for placement assistance, not assurance. We will not be able to assure, because it's a skill. और इसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा कौशल, काबिलियत और कैड। हाल ही में मुंबई के एक बड़े होटल में कैड के एनुअल बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। I deem it an honor to be here to introduce my ex-boss and a good friend of mine, Mr. Mohan Reddy. I'd like to congratulate caddcentre for what they're doing today. I believe a conference that they're doing over and over again. And one of the greatest benefits I believe in these conferences is, one is, you certainly get to hear a few people like me, a few things that you might probably pick up from us. But more importantly, I think they're all people around you who have wealth of knowledge with them. So share with each other. It's all about networking together. If you can network together well and share knowledge, I think it becomes invaluable, not for you, but also for everybody around you. I knew caddcentre several years back. That wasn't said in this video or by Chandler. I used to be their customer, believe me, way back in 1991 or 1992, I believe. That's when I started my journey in what is now known as Scient. And those days, it's been rebranded in the recent past. We were called Infotech Enterprises Limited. And from that day, what I've seen caddcentre grow to be what it is, certainly makes me feel very, very pleased about, very delighted about in an area they choose to be in training. So let's join our hands and clap for caddcentre and the leadership. Thank you very much. May I call Mr. Parthasarathy on stage, our co-chairman. I was at the NASSCOM, annual function, and on stage, I heard the Chief Operating Officer of Cognizant and the CEO of Wipro both say in a public statement at the forum that they are concerned that how can they move from being execution focused and what is to application focused. So when you translate that into caddcentre, it means that the execution focus is the knowledge of the basic CAD and layout and so on and so on. And when you go into application, it means you have to apply your mind and be able to move across functions. And today, the biggest problem we have is we get people who are not practical. And so the knowledge to know which thing to click in Creo or which thing to click in CATIA
is important. In fact, it is essential. I am not saying it's not important. Okay, it is important, but it's more important actually on the next step. So, so if we see what did we, when we say historical, it's actually even happens today. Today we have 200 engineers, okay, working for a company in Chennai. I won't get names, but doing 3D to 2D. So this is 2D to 3D, but they do 3D to 2D. Now 3D to 2D typically, but by the way, there are factors that come in the way there. 3D to 2D is stuff that you need to know how to do, you have some process knowledge, and it's pretty theoretical, straightforward. Nonetheless, our accuracy is well below the target which the customer requires. Okay, so it's because I can tell you the reason is because we are not automating. You need to automate to improve your accuracy. And so if your skill set is converting 3D to 2D, that's one thing, but to really grow it, you need to automate. Now we are going to talk about coming to ground realities of caddcentre businesses. We will talk about the changing dimensions of our training business today. You know, what is that we are doing so that we are able to cope up with the market. Be there on the stage, and we will launch 5 material for mechanical stream and civil. Okay, we will make it for other streams fairly quickly based on how you respond to this first one. Today, if you look at the engineering opportunities in India, they are largely driven by the export marketplace. Today in India, there are at least about 600 companies which do engineering services, which are third-party companies, and there are about 400 of them which are called GICs, which are global in-house centers. How do the engineers prepare themselves to get a job in engineering companies? We primarily look for their basic skills, because we can't teach them basics of engineering once they enter the industry. We expect them to have basics of engineering with them. So therefore, what they have to learn in their education institutions is all about the basics. They have to focus themselves, get the right concepts in order to make sure that they are usable by the companies. अच्छा खास शो जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे करियर में किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए सही ट्रेनिंग की अहम भूमिका है, कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर करियर में सफलता हासिल की जा सकती है। आप देखते रहिए जी मीडिया।